Hello students, today we are going to study a chapter from class 8 history, civilizing the native and educating the nation. Okay, so let's start with the chapter. The topics which we are going to cover in this lecture is beginning of modern education system, and Lord Macauley's minutes. Okay, Britishers have come in India with basically two goals. First was to have a territorial conquest, and another was they were on the civilizing mission. That means that wherever they have made the colonies, they wanted to civilize that community also. They wanted to promote the English culture wherever they have made their colonies. So Britishers have got two goals. First was territorial conquest, and second, promoting the English culture. Now, we have already studied in our previous chapters that how Britishers had a political hold over the entire nation. Like initially they have fought the Battle of Plassey in 1757, and later on they have fought many wars, and till the beginning of 19th century or till the beginning of 18th century they had almost total control over the territories of India. Now they wanted to make the culture of India very much like as it was in England. Okay, so they wanted to promote the English culture. For that they need to change the education system, basic education system of India. So first we will start what was their take on the education. Basically, there were two types of philosophers during British rule in India. There were some Britishers who were Orientalists, and there were some Britishers who were Anglicists. Orientalists were those people who favored the Eastern culture, who favored the art and culture of Asia. In here we can take the example of Sir James Mill, William Jones. So these were the people who basically had
some inclination towards the art and culture of Asia. They thought that Asia or India is a very rich country and their art and culture is very rich, which needs to be promoted. And if they would promote Indian education system, they can basically connect with the local people of India. That is why they wanted to, they were in favor of promotion of Indian education system. But at the same time, there were many Britishers who basically were not in support of Indian education system. They wanted to promote the education system of Europe, which was based on modern science and technology. So Anglicists were those group of people who studied the art and culture of Europe and Western countries. So there were the stark differences between these two type of authorities, and they both wanted to promote different kind of education system. In Anglicist, we can take the example of Lord Macaulay. William Bentinck. Now we will study the year-wise setup of various kinds of schools in India by the Britishers. By the end of 18th century, basically Orientalists had good hold over the education system and policies. So Madarsa was opened in 1781 in Calcutta, where Muslim teachings were given to the students, and in 1791 one Hindu college was opened in Banaras, which is present day Varanasi, और वहाँ पर Hindu laws and beliefs की teachings दी जाती थी बच्चों को.
बट बेसिकली ओरिएंटलिस्ट को बहुत ज़्यादा लोग फेवर नहीं करते थे एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स वर इन फेवर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम. सो देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ सक्सेस इन दीज टू. मदरसा एंड हिंदू कॉलेज जो हैं वो सिर्फ ये दो जगह पर ही खुले और बहुत ज़्यादा नेशनल लेवल पे या पूरे इंडिया में मदरसाज या हिंदू कॉलेज नहीं खुल पाए. 1813 में ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास किया, द चार्टर एक्ट, अकॉर्डिंग टू विच दे वांटेड टू एनकरेज द लर्नड इंडियंस इन सोसाइटी. दे वांटेड टू प्रमोट एजुकेशन ऑफ ओनली लर्नड पीपल और दोज पीपल हु बिलोंग टू द हाई क्लास ऑफ द सोसाइटी, हु आर ऑलरेडी रिच एंड हु already have the access of education. They wanted to promote modern science instead of the basic art and culture of India, literature of India. In this act only, a sum of rupees 1 lakh was allotted for the strengthening of education system in India. But surprisingly, the money allotted was not spent for another 1 decade. So in 1823, one school was opened in Bombay, Elphinstone School. And in 1833, another Elphinstone School opened at Pune. So for 10 years there was no development in the field of education, and in 1823 one school opened in Bombay where basically English was the medium of instruction and all the students were taught in English and only modern science were taught to them. In 1833 similar kind of school was opened in Pune also, and in 1834 to promote higher education Elphinstone College opened at Bombay. So अभी 1834 तक इतने ही डेवलपमेंट्स हुए, जस्ट 2 schools and just 1 college was opened. 1835 में एक रिवोल्यूशनरी डिसीजन हुआ because of the entry of Lord Macaulay. So that is the next topic, Lord Macauley's minutes. मार्च 1835 में लॉर्ड मॉकलेज मिनट्स जो है वो इंट्रोड्यूस होता है. तो बेसिकली इसमें हमें 2 चीजें पढ़नी है, लॉर्ड मॉकले के ओपिनियंस के बारे में एंड उनका जो एजुकेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी इसके बारे में हमें पढ़ना है. सो फर्स्ट इज ओपिनियंस, हिज ओपिनियन अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एंड सेकेंड इज हिज पॉलिसीज. Okay. Basically, Lord Macaulay had very poor opinion about the Indian education system. He thought that the whole library of Indian art and literature is equivalent to just one shelf of European library. सो बेसिकली अगर देखा जाए तो उनका बहुत पुअर ओपिनियन था इस बारे में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और उनका मानना था कि जो एक पूरी लाइब्रेरी है एशिया की या इंडिया की कोई भी एक पूरी लाइब्रेरी जो होगी उसमें जितना भी एजुकेशन है इट इज इक्विवेलेंट टू जस्ट वन शेल्फ ऑफ बुक्स ऑफ यूरोपियन लाइब्रेरी. एंड ही थॉट दैट जो भी हमारे इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी हमारी नॉलेज है इट इज नॉट दैट प्रैक्टिकल एंड इट इज नॉट दैट यूजफुल इन द रियल वर्ल्ड. सो ही हैड वेरी पुअर ओपिनियन अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम.
and he thought that it has got no practical use of its own. जो भी हमारा इंडियन आर्ट एंड कल्चर है या फिर उसके बारे में अगर हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो उसका कोई प्रैक्टिकल एडवांटेज नहीं होगा, ऐसा लॉर्ड मॉकले का मानना था. And he was very outspoken person, and he used to criticize the Indian education system in front of all the Orientalists, and Orientalists could not deny it. वो इतने outspoken थे, इतने debatable थे कि Orientalists जो हैं वो उनको deny नहीं कर पाए. So with the help of Lord William Bentinck, and there were some supporters of Lord Mauchly also, like Raja Ram Mohan Roy, with the help of all these people, they introduced the Lord Mauchly's minute, and in that minute it was given that from now onwards Britishers would promote modern science only, and medium of instructions जब लॉर्ड मॉकले अपने मिनट्स दे रहे थे तब एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा डिबेट होता है, एंड ओरिएंटलिस्ट वर इन फेवर ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज फॉर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन स्कूल. स्कूल में जो भी पढ़ाई की जानी चाहिए वो अरेबियन और पर्शियन होनी चाहिए, बिकॉज सोसाइटी में जो भी रिच लोग थे वो मोस्टली यही दो लैंग्वेजेस यूज करते थे. बट लॉर्ड मॉकले हैज फोर्स दैट कि जो भी स्कूल अभी हम अपकमिंग स्कूल सेटअप करेंगे या कॉलेजेस जो हम सेटअप करेंगे उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश ओनली. इंग्लिश में ही वो पढ़ाई होनी चाहिए, और जो भी पढ़ाई करनी चाहिए उसका करिकुलम जो होगा वो मॉडर्न साइंस के ऊपर बेस्ड होगा, ना कि एशिया के आर्ट कल्चर और लिटरेचर पे बेस्ड होगा. नाउ व्हाट वाज हिज गोल बिहाइंड दिस, दैट ही वांटेड टू प्रोड्यूस दोज काइंड ऑफ इंडियन He wanted to promote those kind of citizens who were Indian in blood but British in taste. सो हिज गोल वाज बेसिकली कि हम उस तरह के इंडियंस प्रोड्यूस करेंगे जो कि इंडियन होंगे बाय ब्लड, बट टेस्ट एंड इंटेलेक्ट में दीज पीपल शुड बी वेरी मच इंग्लिश. बिकॉज ऑफ दिस दे विल ऑलवेज रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिशर्स. जो हम एक नया ग्रुप ऑफ सिटीजन्स क्रिएट करेंगे जिनको बचपन से ही ब्रिटिश एजुकेशन दी जाएगी, जिनको मॉडर्न साइंस के बारे में पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में, दे विल ऑलवेज रिमेन लॉयल टू देम. इसीलिए इन्होंने मॉडर्न साइंस को प्रमोट करने की कोशिश की. अदरवाइज द आर्ट एंड कल्चर ऑफ एशिया वॉज वेरी रिच, और ये जो थे हमारी एक आइडेंटिटी भी क्रिएट करते थे, बट दे डोंट वांटेड दैट टू बी प्रमोटेड. इसलिए उन्होंने मॉडर्न साइंस को प्रमोट किया, एंड 1835 में ये जो मिनट्स हैं ये पास हो जाते हैं. थैंक यू.